Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone here. We are live on JK Sports Time from the beautiful ground of HMT here in Srinagar, and it is the Hokersar knockout T20 cricket tournament, the inaugural match of the said tournament, and we are bringing the live action for our viewers on JK Sports Time. We welcome every one of you here, and it's a crackerjack of a match between the two top teams of the valley. On one side we have a team Hooked Srinagar, and they are up against a star-studded lineup of team Friends Motors Narbal. This afternoon, team Friends Motors Narbal winning the toss and deciding to field first. Hooked has been sent into the bat. We have got two umpires of the match, Advocate Hilal Ahmed, one of the seasoned campaigners as per the umpiring arena is concerned, and he has got ample knowledge of cricket as well. He is officiating in this match along with the square leg umpire, and it's all set now. Adil Rishi has got the ball in his hands, starts throwing the first ball of the tournament. That one has been cracked off the back foot down towards the cover boundary for four. Well, you can't just ask for a better start than this. Pitched up on middle and off on the off stump. Down comes the bat of the batsman and thrashes it past extra cover towards the boundary for four. So Hooked have started the campaign on a brilliant note. A boundary of the very first ball. The next delivery on that channel, on pitching on the off stump, moving further away, and the batsman shouldering arms, allowing the ball to go through to the keeper. It's four without loss. Team Hooked batting first after losing the toss this afternoon. Adil Rishi, walking back to the top of his bowling mark, starts running. Up to the wicket, comes in and ball. This is in the air, but that has been plucked once again, plundered into the gap. Four more runs. Was a gentle half volley outside the off stump, and the batsman thrashing it. Abid Nabi has started brilliantly for his team. Abid Nabi, one exceptional star from our valley, seasoned campaigner, representing the valley and representing ICL as well. Adil Rishi up against Abid Nabi. It's eight for no wicket. Once again outside the off stump, but this time the protection is there. The fielder had been sent right at the deep extra cover boundary, sweeping there, who comes running in and fields, and Abid Nabi helps himself with a single. With that single, the total now moves to 8 without loss. Hooked losing the toss and are batting in the first over. Adil Rishi is the bowler. We have a wicketkeeper standing back. We have a slip. We have a gully. And we have a backward point inside the circle and a straightish point inside the circle. Here is Adil Rishi. Balls to the new batsman outside the off stump, keeping low as well. And batsman is none else than Mohsin Ramzan. The brilliant Mohsin Ramzan, as every one of you know, is up against Adil Rishi. It's 9 without a wicket. Abid Nabi has scored all the 9 runs so far with the help of 2 boundaries. Here is Adil Rishi switching ends now, round the wicket to Mohsin. Mohsin thrashes it, but straight to the fielder at point. Point fails, there cannot be any runs. The score still remains at 10 without loss. Adil Rishi walking back to the top of his bowling mark. I was giving you the field positions.
Then there is an extra cover inside the circle in the form of a fielder there. Adil Rishi bowls the next ball. That has been cracked off the back foot. Straight down the ground. 4 more runs. Once again, a gentle loosener on the off stump. And the batsman going onto the back foot and cracking it with all the might. Over the bowler's head. A safe shot. And 4 more runs. The third boundary in the over. And the score now moves to 14, beg your pardon. It's 14 without loss. Adil Rishi's expensive over comes to an end. And the first over of the tournament comes to an end as well. It's 14 without loss. Team Hooked Srinagar up against Friends Motors Narbal. It's Hokersar knockout T20 cricket tournament. And it's going to be played here in the beautiful ground of HMT Srinagar. Ishtiaq Rasool, Ishnag, has been brought into the attack. Well, it will be interesting to see him bowl. He can just bowl those in-dippers. Ishtiaq Rasool is going to bowl to Abid Nabi. A wicketkeeper standing back. There is a fielder in the slips. There is a gully as well. A backward point. A straightish point. A mid-off. Extra cover inside the circle. Here is Ishtiaq Rasool. Right arm over the wicket. Comes in. Outside the leg stump. The first ball. It's a wide. Ishtiaq Rasool not controlling the swing on that ball. As a result, the ball straying down the leg side and collected well behind by Wasim. On the offside, I gave the field positions. On the onside, after this delivery in the air for some time, but Ishtiaq Rasool was not up to the mark. He was trying to come forward and catch that. It is Ishtiaq Rasool once again. Outside the leg stump. Abid Nabi wanted to thrash it. He's beaten. And the umpire signals a wide. 2 wide so far in this over. Ishtiaq Rasool is not getting it right. And on the onside we have a long on the boundary, a deep mid-wicket on the boundary, and a short fine leg inside the circle. Ishtiaq Rasool. I beg your pardon, a fielder at deep square leg on the boundary. Here is Ishtiaq Rasool. Bowls to Abid. Abid comes forward and knocks it away. In the gap, on the onside, Ishtiaq Rasool himself comes in and fields. And the batsmen take a single. Abid Nabi is batting with that single on 10. He's in the double figures. The total is 15. Beg your pardon, is 17 for the loss of no wicket. Wasim Kachru, the wicketkeeper behind the stumps. Ishtiaq Rasool. Ishtiaq Rasool bowling a jeff off a delivery. Had that fielder been there, it would have been an easy catch. But since that fielder had been displaced from that position, as a result, the edge flying to the right of Wasim, down to the third man boundary for 4. A lucky boundary, a lucky escape from Mohsin Ramzan, because that fielder was stationed exactly for that shot. But then displacing the fielder from there, Ishtiaq Rasool was not happy on that occasion. The boundary taking the score to 21. Here's Ishtiaq once again. That's a lovely delivery. An appeal for LBW. Coming in towards the batsman, and the in-dipper that Ishtiaq Rasool is famous for. Pitching on the off stump, coming in. But it was clearly missing the leg stump. Umpire shaking his head. Mohsin Ramzan is not looking in that touch for which he's known for. 21 without loss.
Next ball is in the air and he is out. He's gone. A beautiful running catch. The fielder inside the circle. A short, long on position, I can call it. Running from mid-on towards his left and plucking that ball out of the thin air means Mohsin Ramzan has been dismissed. Mohsin Ramzan seeing the opportunity. It was a fuller length ball on middle and leg. The batsman wanted to hit it straight over the bowler's head, not getting the timing right. The ball was flying, so was the fielder, and he plucked it out of the thin air. It's 21 for 1 now. Team Hokesar has lost Mohsin Ramzan, and the first blood has been drawn by Friends 11, Friends Motors Narbal. Team Hokesar Srinagar is a star-studded lineup, having the likes of Wasim Kachru, Jahangir Lone, Ishtiyaq Rasool, and so many other good players. An exceptional lineup. Team Hokesar has the likes of Abid Nabi, the seasoned campaigner, who's batting on 10 with the help of 2 boundaries. Ishtiyaq Rasool will be bowling to the new batsman in. Let's go now. Aqib is the new man in. Here is Ishtiyaq Rasool. To Aqib. Aqib has been hit on the pad and he has been given out. Ishtiyaq Rasool is known for those endeavours. The ball hitting him low on the knee roll, in front of the stumps, flush in front, and the umpire has no hesitation in his minds whatsoever, raising his finger and signalling Aqib to march back to the pavilion. He has been dismissed for a duck, a golden duck. Ishtiyaq Rasool has drawn the second blood. 2 wickets down for Team Friends Motors Srinagar. Ishtiyaq Rasool will be on a hat-trick now. What a delivery that was. Swinging the ball in the air, coming towards the pads, and the batsman has no answers for it. It was struck flush in front of the middle stump. You can't get as plumb as it was. A brilliant delivery. So Team Hokesar Narbal in a bit of a strife now, because they have lost 2 top order batsmen. Mohsin Ramzan and Aqib are back to the hut. It's a great start to the season. Spring here in Kashmir. I can give you the scenes outside the ground. Well, the snow-clad mountains are posing a brilliant view here. It's terrific atmosphere for cricket here. Ishtiyaq Rasool has bowled a decent first over, a threatening first over, and he has taken 2 wickets of Team Hokesar. Team Hokesar is now on back foot. 21 for 2. It will be Adil Rishi to start his second over. Right arm over the wicket. He'll be bowling to Abid Nabi. Comes in, balls to Abid Nabi outside edge, and he has been dropped. A regulation catch. A regulation catch for the fielder in the gully. But guess what? He has dropped a sitter. Well, it can't be a dolly like that. Simple catch, head high, and the fielder making a mess of it. Abid Nabi, a lucky scare for him. And in the meantime, he has got himself the luxury of a couple. The unlucky bowler is Adil Rishi.
Abid Nabi is batting on 16. The total 23 for the loss of 2 wickets. Here is Adil Rishi for the second time in this over. Comes in, bowls to Abid Nabi, and Abid Nabi has been bowled off the inside edge. Abid Nabi, half-hearted pull. The ball taking the inside half of the bat and smashing his off stump. So Abid Nabi's short stay at the crease comes to an end, and it was not a costly miss. The fielder who was fielding there in the gully region would have taken a sigh of relief, because Abid Nabi can be very dangerous for the opponents. But his history now is going back to the hut. He's been dismissed by Adil Rishi. Not before he scored 14 runs. Team Hoked Srinagar now sinking further. And they are 23 for the loss of 3 wickets now. This ground is located on the roadsides, and we have some beautiful view of this ground. It's not a big ground, it's a short ground, but it's good for cricket. It's suitable to play cricket like this. It can be a brilliant match. But Team Hoked Srinagar, Team Hoked Narbal and Friends Motors have brought them on knees so far. The new batsman in is the left-handed batsman. Zahid is the new batsman, and Adil Rishi is going to bowl over the wicket to Zahid. The wicketkeeper standing back. A lone slip. A short third man inside the circle. A backward point inside the circle. A short cover in the form of Jahangir Loon inside the circle. And a mid-off inside the circle. On the offside, on the onside, we have a square leg on the boundary. We have a fine leg on the boundary. Then we have a short square leg inside the circle, and a mid-off and mid-on inside the circle. Zahid is going to take guard. He is ready now to face Adil Rishi. Adil Rishi he bowled an expensive first over. Fielder at short leg wearing a helmet is waiting for a possible opportunity. That was a good length delivery coming towards the ribs of the batsman. The batsman did well, just dabbing it down, and there cannot be any harm. So the score still remains at 23 for the loss of 3 wickets. Here is Adil Rishi to bowl to Zahid. Comes in, bowls to Zahid. There is a loud shout. He's going to be out. Yes, he has been given out. And Zahid cannot believe himself. What a delivery. That one pitching on the off stump, coming towards the batsman and hitting him flush in front of middle end leg. And umpire Advocate Hilal, he knows cricket very well, has no doubt whatsoever in his mind, raising the crooked finger, raising the dreaded finger, and he has marched the orders to Zahid to go back to the hut. Again, a batsman has been dismissed for a duck. Not a golden duck though, but Zahid LBW bowled Adil Rishi for not dejectedly going back towards the hut. Now Team Hoked Srinagar now in a spot of bother. They are 23 for the loss of 4 wickets now.
Exceptional bowling skills so far in this over from Adil Rishi. That was an in-dipper, and the batsman was not up to the task, missing the line of the ball completely, and it hit him flush in front of the stumps. Adil Rishi is now spitting venom and fire. Team Hokut Srinagar need a partnership. The two new men, new faces, new batsmen in middle. It won't be easy for them. Momin is the new man in, and Momin will be facing Adil Rishi. 23 for the loss of 4 wickets. Adil Rishi bowls a lovely delivery, but it's a no ball. It was a good delivery bowled, pitching on the middle, moving away, leaving the right-hander. The umpire signalling a no ball. It will be a free hit. Will this free hit help Team Hooked batsmen to gain some momentum? It will be worth watching. Here is Adil Rishi bowling a free hit delivery. The batsman trying to pull it, as the ball hitting him on the cue end, rolling all along the ground towards Wasim, who feels, and there cannot be any runs. Momin and Jahangir on the crease. The batsman dismissed so far. Mohsin Ramzan, he was out for 6. Abid Nabi is dismissed for 12. Meanwhile, here is Adil Rishi, comes in and bowls to Momin. Momin comes onto the back foot and steers it away straight to the fielder at backward point, who feels there cannot be any runs. The total remains on 23 for the loss of 4 wickets after the completion of 3 overs. The batsman in the middle is Momin, who is batting on not, and with him is Jahangir, who is also yet to open his account. Team Hokut Srinagar losing the toss this afternoon are batting. They have lost 4 top order batsmen to the 2 exceptional and seasoned campaigners, Adil Rishi and Ishtiaq Rasool, taking 2 wickets in their respective 2 overs. 3 overs have been bowled, 23 for the loss of 4 wickets. And for the further continuation of commentary in Hindi, it's over to my friend Nasir. शुक्रिया इरशाद भाई। यहाँ आज होकरसर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल खेला जा रहा है। टीम हुक्ड और फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के माबैन टॉस जीतकर यहाँ फील्डिंग करने का फैसला किया है हुक्ड के। हालांकि फ्रेंड्स मोटर के कप्तान ने शुरुआत अच्छी नहीं रही हुक्ड की, लगातार 3 झटके लगे हुक्ड को। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, गेंद गई फाइन लेग क्षेत्र की तरफ, जहां से गेंद को उठा के थ्रो किया जाए। विकेट कीपर के पास दूसरा रन लेना चाहते थे, ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर वसीम कासरो, अन्यथा ये एक और झटका लग सकता था हुक्ड को। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इनकी शुरुआत करने के लिए आए थे मोहसिन रमजान और आबिद नबी। आबिद नबी ने टीम के लिए 12 रनों का योगदान दिया, जबकि 8 रन बनाकर अपनी कीमती विकेट गंवा बैठे थे मोहसिन रमजान। इश्तियाक ना किए गए इस बार मिडल और लेग स्टंप के आसपास, पैड पर लगी जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर ने साफ नकारा। लेग बाइज के रूप में 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 26 रन। टॉस हारकर यहां बैटिंग कर रही है टीम हुक्ड। काफी घातक साबित हुए हैं दोनों गेंदबाज, आदिल रशी और इश्तियाक नाग। आदिल रशी ने इनिंग की शुरुआत की थी फ्रेंड्स की तरफ से, बॉलिंग करने के लिए वो पहले आए थे और उन्होंने एक बड़ी विकेट जो हासिल की थी आबिद नबी की, और फिर उसके बाद एक और झटका लगा था मोहसिन रमजान के रूप में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और बाहर की ओर निकली
गेंद को जाने पर दिया विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, लेकिन हल्का सा फंबल हुआ। लॉब मिलेगा 22 के रूप में 1 रन। हालांकि कुल मिलाकर 2 रन खाते में। दो वाइड में गिने जाएंगे ये 2 रन। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। होकरसर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इनाग्रल मैच खेला जा रहा है। इस बार थोड़ी सी शॉट नीरोल के काफी नीचे लगी, लेग स्टंप को मिस कर रही थी। उत्साह था लेकिन विश्वास की कमी थी साफ इस अपील में। यही कारण है अंपायर ने इस अपील को साफ न करा। ऑफसाइड में अगर फील्डिंग का मुआयना किया जाए तो फैलाई हुई फील्ड नजर आ रही है। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट लगाया गया है। थर्ड मैन जहां मेराजो अमीन फील्ड कर रहे हैं, कवर्स में एक खिलाड़ी नजर आ रहा है और मिड ऑफ लगाया गया है। यह है ऑफसाइड की फील्ड। कुल मिलाकर 5 ऑफसाइड में 4 ऑन साइड में। ऑन साइड में मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग हेलमेट लगा के जहां खिलाड़ी फील्ड कर रहे हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग के आसपास जहांगीर लोन फील्ड कर रहे हैं और डीप फाइन लेग पे एक खिलाड़ी मौजूद। मोमिन और जहांगीर भट्ट क्रीज पे मौजूद। 4 विकेटें अब तक गंवाई हैं टीम होकुड ने। इश्तियाक नाग लाइव में नजर आ रहे हैं, बखूबी साथ दे रहे हैं आदिल रशी और इश्तियाक नाग, जिन्होंने बॉलिंग का मोर्चा संभाला है फ्रेंड्स मोटर्स की तरफ से। इश्तियाक नाग और स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। आज के जो अंपायर हैं मायानाज अंपायर, एक जाना पहचाना नाम एडवोकेट हिलाल का। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को खेलना चाहते थे फाइन लेग क्षेत्र की तरफ, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई। शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद फील्ड हुई, जहांगीर लोन के हाथों रन की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पे। इश्तियाक रसूल ओवर द स्टंप्स। इस बार जहांगीर भट्ट को ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, वहां कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जहांगीर भट्ट के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। शॉट थी, बैक पे कमेंट हुए, सारा वजन पिछले पैरों पे लिया, गेंद को लॉफ्ट किया दूर उस ओर जहां कोई खिलाड़ी नहीं था। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अभी भी जो जॉइंट स्कोर बोर्ड है उस पर स्कोर नहीं आया। लगभग स्कोर 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। बॉलिंग में कोई परिवर्तन नहीं। फिर से आदिल रशी अपना तीसरा ओवर और इस पारी का जो 5वां ओवर होगा उसी छोर से वो गेंदबाजी करेंगे जहां से उन्होंने इनिंग की शुरुआत की थी। मोमिन सामना करेंगे आदिल रशी का। आदिल रशी और स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज अंपायर एडवोकेट हिलाल को क्रॉस किया। इस बार सिरा ऐसा तो लगा लेकिन कुछ हुआ नहीं। बल्ले के काफी करीब से गेंद गई विकेट कीपर वसीम कासरू के दस्तानों में। आदिल रशी, सामने है मोमिन। स्लिप कॉर्नर में कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी तैनात, किसी भी अवसर को लपटने के लिए तैयार। इस बार ऑप्शन से बाहर बैक पर गए, पंजू पर उछलते हुए बल्ले का सिर्फ मुंह खोला, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लगने दिया। पॉइंट क्षेत्र में गेंद फील्ड हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत ठीक नहीं रही हुकुड की। हालांकि 1-2 बड़े स्ट्रोक्स पहले ही ओवर में देखने को मिले, लेकिन तब से अब तक जो विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ अब तक वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आदिल रशी की गेंद इस बार बढ़िया गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर सके। हालांकि प्लेसमेंट भी ठीक नहीं बैठा। फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई आदिल रशी के हाथों, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। होकरसर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इनॉग्रल मैच खेला जा रहा है। टीम होकुड का मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के साथ। इस बार लेग स्टंप पर गिरने के बाद गेंद अंदर की ओर आई, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लगने दिया। गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए, डीप स्क्वायर लेग से चहलकदमी करते हुए रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे मोमिन। जहांगीर भट्ट अब सामना करेंगे आदिल रशी का। 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आज के जो अंपायर हैं वो हैं एडवोकेट हिलाल। यह एक ऐसा नाम है जिन्होंने वादी क्रिकेट में छाप छोड़ी है अपनी अंपायरिंग से। अंपायरिंग जो भी हो, अगर अंपायरिंग का स्टैंडर्ड देखा जाए तो पहला नाम अगर वादी कश्मीर की बात की जाए तो एडवोकेट हिलाल का आता है। आदिल रशी राउंड द स्टंप्स अब गेंदबाजी करेंगे क्योंकि जानते हैं
जहांगीर भट्ट यह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक अच्छा स्ट्रोक लिया था जहांगीर भट्ट ने पिछले ओवर में इश्तियाक रसूल के खिलाफ। आदिल रशीद की गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद कोन बनाती हुई गेंद और बाहर की ओर निकली, बल्ले को गेंद की लाइन से जुदा किया, गेंद को जाने पर दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में स्लिप कॉर्नर में उत्साह बढ़ा रहे हैं जहांगीर लोन और इश्तियाक रसूल। अपने गेंदबाज आदिल रशीद का, आदिल रशीद राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। मिड ऑन लगाया गया है, डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी तैनात। कुल मिलाकर 2 ऑन साइड में 7 ऑफ साइड में 7-2 की फील्ड के साथ ऑप्शन से बाहर गेंद को निकाल दिया, कवर क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद बैक पर गए, गेंद को निकाल दिया, वहां प्रोटेक्शन नहीं रखी गई थी, हालांकि वहां तो एक खिलाड़ी मौजूद था डीप में, लेकिन गेंद उनसे कोसों दूर, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 5वें ओवर का खेल समाप्त। टॉस हारकर यहां बैटिंग कर रही है टीम होकल्ड। टीम का स्कोर 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रन इश्तियाक नाग। नए ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है जो इस पारी का 6वां ओवर होगा। हालांकि स्कोर की अगर रफ्तार देखी जाए, अगर रन औसत देखी जाए तो ठीक ठाक है। 5 ओवर में 38 रन जोड़ डाले हैं हुकड़ के बल्लेबाजों ने, लेकिन जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो बड़ा मुश्किल उनके सामने हुआ है, वो ये है इन 38 रनों तक पहुंचने के लिए उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेटें गंवाई। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया। जब तक रिटर्न थ्रो आए, विकेट कीपर वसीम कासरो के पास 1 रन बनाने का पर्याप्त समय था। 1 रन बल्लेबाज के खाते में, टीम के खाते में 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मोमिन और जहांगीर भट्ट डूबती नैया को उन्हें सहारा देना होगा और इसी कड़ी में, इसी तलाश में अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार गेंद खतरनाक ढंग से ऊपर की ओर उठी, जैसी तैसी गेंद को धकेला, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 6ठे ओवर का खेल प्रगति पे। इश्तियाक रसूल ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना 3रा ओवर और इस पारी का 6ठा ओवर। ऑफ साइड में अगर फील्डिंग देखी जाए तो मिड ऑफ लगाया गया है। कवर्स में 1 खिलाड़ी है, पॉइंट पे 1 खिलाड़ी, स्लिप कॉर्नर में कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी मौजूद। ये है ऑफ साइड की फील्ड। इस बार पैड पर लगी, शफल किया। शायद यही वजह है कि अपील में उत्साह देखने को नहीं मिला। हल्का सा सवाल पूछा था जरूर इश्तियाक नाग ने, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। लेग बाइज के रूप में 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फ्रेंड्स मोटर्स आज यहाँ उन्होंने टॉस जीता। पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया, फैसला सही साबित हुआ, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। टॉप क्रम टीम होकड़ का इश्तियाक रसूल इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स क्रीज के कोने से इस बार गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया। गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए, मिड ऑन क्षेत्र से 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक लेंगे मोमिन। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पहुंचे हैं जहांगीर भट्ट। शॉर्ट स्क्वायर लेग लगाया गया है, जहां हेलमेट लगा के आदिल रशीद फील्ड कर रहे हैं। मिड ऑन पे एक खिलाड़ी, यह है ऑन साइड की फील्ड। रसूल की गेंद और एक बढ़िया कैच, हालांकि एक अवसर मिला था कैच लपकने का, एक अच्छा प्रयास आदिल रशीद का, लेकिन गेंद उनके हाथों से लगने के बाद छट गई। और ऐसे में हम कह सकते हैं जहांगीर भट्ट जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे अभी भी मौजूद, स्ट्राइकिंग एंड पे मोमिन खेल रहे थे। एक अवसर मिला था मोमिन को आउट करने का, लेकिन जाने दिया आदिल रशीद ने। किस्मत वाले रहे मोमिन, अभी भी विकेट पे डटे हुए हैं। इस बार गेंद ऑप्शन से गिरने के बाद कटर का इस्तेमाल किया है इश्तियाक नाग ने। डॉट गेंद के साथ इस ओवर का खेल समाप्त, 6ठे ओवर का खेल समाप्त। टीम का स्कोर 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप हमारे साथ लाइव कवरेज देख रहे हैं जेके सपोर्ट्स टाइम पे। मोहसिन रमजान, आबिद नबी, आकिब, जाहिद डार, ये 4 सफलताएं हैं जो टीम होकड़ को मिली। विकेट कीपर वसीम कासरो, कुछ बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं। वसीम कासरो, जहांगीर लोन,
इश्तियाक रसूल, जाहिद डार, आदिल रशी, और इन सब के बावजूद जो आतिशी बल्लेबाजी की तमन्ना थी, हर दर्शक यही चाहता था कि हमें यहाँ आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिले, लेकिन अब तक उसमें सफलता नहीं मिली होकर्ड को। होकर्ड सितारों से लेस टीम थी, लेकिन यहाँ एक के बाद एक झटका लगता हुआ इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी तरह से उनकी नैया डूब चुकी है। उस नैया को सहारा देना होगा और ऐसे में एक कोशिश हो रही है मोमिन और जहांगीर भट्ट के द्वारा। देखना है उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं। मेरे जो साथी कमेंटेटर हैं इरशाद साहब, इससे पहले वही इस मैच का आपको विवरण दे रहे थे। कुल मिलाकर 32 टीमों ने इसमें शिरकत की है। होकरसर क्रिकेट टूर्नामेंट नॉकआउट T20 टूर्नामेंट ये खेला जा रहा है। आज इनाग्रल मैच, काउंट मैच है ये। होकर्ड का मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स के साथ। जो भी टीम यहाँ मैच हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऐसे में कतअन ऐसा होने नहीं देंगे। होकर्ड के कप्तान आमिर शर्मा चाहेंगे कि यहाँ एक जीत हासिल करके दूसरे राउंड में प्रवेश किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं चाहेंगे फ्रेंड्स के कप्तान। बॉलिंग में परिवर्तन, पहली बार बॉलिंग में परिवर्तन, इस बार ऑप्शन से बाहर, सारा वजन पिछले पैरों पे लिया, जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए, गेंद को खेला कवर। रफीक अपना पहला ओवर और इस पारी का 7वां ओवर। रफीक ओवर द स्टंप्स, रफ्तार ज्यादा नहीं है इसके पास। इस बार गेंद को दिशा बर दी स्लिप कॉर्डन की ओर, जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल जारी। इश्तियाक रसूल मिड ऑफ और कवर के दरमियान जो खाली इलाका पड़ा हुआ है वहां वो फील्ड कर रहे हैं। डीप पॉइंट लगाया गया है। इस बार खतरनाक ढंग से गेंद ऊपर की ओर उठी, बल्ले के ऊपरी भाग से गेंद लगी। हालांकि एक अवसर बना था स्लिप कॉर्नर में कैच लपकने का, लेकिन खिलाड़ी से कुछ दूर गेंद गिरी और किस्मत के सहारे अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं जाहिद भट्ट। जहांगीर भट्ट अब सामना करेंगे मोमिन। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर में चौथी बार रफीक ओवर द स्टंप्स। मोमिन को इस बार ऑप्शन से बाहर कट करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके गेंद नीचे बल्लाओं पर विकेट कीपर के पास। ऐसे स्ट्रोक के लिए पॉइंट लगाया गया है, डीप पॉइंट, जहां खिलाड़ी मौजूद गली के आसपास आदिल रशी फील्ड कर रहे हैं। रफीक ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार फिर से बैक पे सरकते चले गए, गेंद को खेला, गेंद गई दूर उस ओर जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। विकेट कीपर के पास चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे मोमिन। स्ट्राइक लेंगे जहांगीर भट्ट सामना करेंगे रफीक ओवर द स्टंप्स। इस बार गेंद काफी नीचे रही, अनुमान से कुछ ज्यादा नीचे रही। गेंद को खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, गेंद गई विकेट कीपर वसीम कासरू के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर का खेल समाप्त। 7वें ओवर का खेल समाप्त। 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर टॉस हारकर यहां बैटिंग कर रही है होकर्ड की टीम। आगे का विवरण देंगे मेरे साथी कमेंटेटर इरशाद भाई। Thank you, Nasir. Team Hooked have stabilized through this partnership so far, and the score is 44 for the loss of 4 wickets. 44 for 4. Top order has been blown away by the likes of Ishtiaq Rasool, Ishnag and Adil Rishi. Bowling change, and Jahangir Lone has been brought into the attack. He's going to bowl to Momin. Comes in, bowls to Momin. He bowls a back of a hand delivery on the middle and off, and the batsman coming forward, nudging it away onto the offside before Adil Rishi can come and pick up, and the batsmen are through for a single. That single takes the score to 45. 45 for the loss of 4 wickets. Here is Jahangir Lone to Jahangir, and Jahangir wanted to swivel and pull, not getting a proper timing on that. The ball off the bottom edge, trickling away towards short fine leg.
where the fielder from slips goes and fields and the batsmen take a single. The score now moves to 46 for the loss of 4 wickets. Here is Jahangir Lone. In bowls to Momin. Momin drives and drives elegantly. But there is protection in the deep. In the form of deep mid-off who fields. And the batsmen take a single. Now the batsmen have started to open up. Because the 2 bowlers of team Friends Motors Srinagar have tightened the screws up. Gave nothing away to the batsman of Hukud to score. The next ball in the air, thrashed, and that's a lovely shot. Jahangir Lone bowling a friendly half volley outside the off stump, and the batsman going on to the back foot and just lofting it straight over the head of extra cover, all the way into the boundary for a 6. The first 6 of the match coming from the bat of Jahangir Ahmed. Jahangir Butt. And with that 6, the score moves to 50. 50 for the loss of 4 wickets. The 4 batsmen dismissed in the power play, because we saw some exceptional bowling by Adil Rishi and Ishtiaq Rasool. They were unplayable. They gave nothing away apart from that first over bowled by Adil Rishi, in which he gave away 14 runs. Ishtiaq Rasool has taken 2 wickets, and so has Adil Rishi. 2 wickets each in their first spell, meaning that the team Hukd was onto the back foot in the power play. But this partnership between Momin and with him is Jahangir Butt have stabilised the proceedings so far, and they have taken the score to 54. Team Hukd Srinagar are up against Team Friends Motors Narbal in this all-important inaugural match of Hokersar knockout T20 cricket tournament. The team who loses have to pack the bags, and they will be out of the tournament. Team Hukd so far are looking not, I can't say down and out, but they are under pressure because they have not been let off the hook. But this partnership, you can't say anything until the last ball has been bowled, and T20 cricket, a single over can change the course of the match. The ball has been retrieved back and it's all set. Here is Jahangir Lone. Comes in and bowls to Jahangir. Jahangir goes on to the back foot, nudges it away, down towards square leg. Wicketkeeper Wasim Kachru from behind the stumps goes running in and fields, and the batsmen take a single. That single takes the score to 55 now. Four wickets have been lost. Here is Jahangir Lone. Bowls to Momin. Momin comes right behind the line of the ball and plays it away onto the offside. The fielder comes in and fields. And that marks the end of Jahangir Lone's first over and marks the end of the 8th over of Team Hukd innings. They are batting first after losing the toss in this inaugural match of Hokersar T20 knockout cricket tournament here at HMT Ground, Srinagar. They are 54 for the loss of 4 wickets. Wasim Kachru is up to the wickets, is stuck behind the wickets, stuck to the wickets, waiting for any opportunity. Here is Rafiq. Bowls a gentle medium pace delivery outside the off stump. The batsman, seeing the opportunity, wanted to thrash it, but missing the line of the ball completely. Here is Rafiq once more. Right arm over the wicket, comes in, bowls to the batsman who drives and drives up in the air over the fielder's head at gully, and the ball trickling away to the boundary for 4. Not timing the ball properly,
He was in the air for some time, but there is no fielder patrolling the backward point boundary, and as a result the ball went away to the boundary for 4. That boundary taking the score to 58 for 4 in the 9th over. And in the meantime, Jahangir taking another single, taking the score to 59. The next delivery, delicately, brilliantly tucked round the corner, but straight to the fielder at fine leg boundary, who comes in and picks the ball up, and the batsman take a single. That single takes the score now to 60. 60 for the loss of 4 wickets. A good partnership between Momin and Jahangir in the middle. Rafiq bowls the next delivery. The batsman comes forward, running with the shot, but the non-striker Momin sending him wisely back. No addition to the score, which remains stagnant at 60 for the loss of 4 wickets. A wicketkeeper up to the stumps. There is a slip. Then there is a gully, a backward point. The next delivery has been stroked away onto the onside, down towards deep mid-on, and the batsman taking the second run as a result of that fumble. The score after the completion of the 9th over is 62 for the loss of 4 wickets. The batsman dismissed: Abid Nabi, Mohsin Ramzan, Mohammad Zahid and Mohammad Aqib. The 4 batsmen dismissed so far. We are in the start of the season. It's spring here in Kashmir, and it can't get better as per the season is concerned. The next delivery, that is played geniusly. Seeing the line of the ball, swaying away from the line, and just helping it on its way. Helping it on its way over the fielder's head in the slips, down to the third man boundary for 4. It was cheeky, but it was safe. 4 more runs. Score 66 for the loss of 4 wickets. The next delivery, once again going for the same kind of shot, is beaten, and he's lucky that he has escaped on that. Jahangir Lone bowling another short of a length delivery, this time following the batsman. The batsman again making room, wanted to ramp it over the fielder's head. Fuller length delivery, this time slower ball, well disguised slower ball. Jahangir Lone, but the batsman was up to the task. Momin waiting for the ball and cutting it away down towards Adil Rishi and picking up a single. That single takes the score to 67 for the loss of 4 wickets now. Here is Jahangir Lone. Bowls to Jahangir. Once again a back of a hand delivery. Jahangir Lone bowls those back of hand deliveries quite often, but bowls them with pace too. That's an exceptional skill as per the bowling is concerned. Jahangir Lone is a mighty all-rounder from North Kashmir. Next delivery from Jahangir Lone, once again threatening the stumps. Jahangir Butt coming behind the line and pushing it away in front of Jahangir Lone, who comes in and fields, and there cannot be any runs. The score 67 for the loss of 4 wickets. Team Hokut Srinagar are up against Friends Motors Narbal. Here is Jahangir Lone for the last time in this over. Comes in and bowls outside the leg stump. And how did it miss the leg stump? And the umpire being harsh on that, he signalled a wide. It just missed that leg stump by a whisker. Had there been an extra coating of paint on that stump, it would have been castled back. Jahangir Lone
has to re-ball this ball. Jahangir Bhatt comes forward, plays it with dead bat, back along the track to Jahangir Bhatt. Jahangir Lone to pick it in his follow-through. There cannot be any single. That over completes. It's 68 for the loss of 4 wickets. Jahangir Lone coming back strongly in this over and bowling a decent over. 68 for 4, team hooked. Batting first after losing the task this afternoon. Packed back by those early wickets. 4 of them in the power play. And Adil Rishi and Ishtiaq Nag blowing the top order of team hooked. After the completion of 10 overs, 68 for the loss of 4 wickets. Spin has been introduced. Right arm leg spin. A good delivery, good first delivery. Beating the batsman, trying to cut. Yeah. Asif is bowling his leg spinners. He'll be bowling to Momin. Comes in, bowls to Momin. Momin comes onto the back foot, waiting the ball to spin and cutting it away straight to the fielder at extra cover, who's sweeping the boundary, and the batsman take a single. That single takes the score to 69 for 4 now. 2 balls have been bowled in this over. Leg spinners are a treat to watch. They can give runs, they can cost you runs, but they can get wickets too. Wicket-taking bowlers, leg spinners. That's what Asif is bowling right at the moment. This time flattening the ball up, bowling it short. The batsman moving onto the back foot, playing it with a horizontal bat down towards Jahangir Lone, who's fielding at deep mid-wicket. The next delivery, that's a good delivery. Slowing the pace up, flighting it up, and the batsman is beaten outside the off stump. Asif is bowling with the wicketkeeper up to the stumps. The next ball, tossed up, the batsman driving it, but straight to the fielder at deep mid-off boundary, who is Ishtiaq Nag, who comes running in, and the batsman in the meantime go through for a single. 71 for the loss of 4 wickets. Once again tossing it up, this time driving beautifully, well fielded inside the boundary, just couple of inches inside the boundary by Jahangir Lone, moving away from deep mid on and cutting 3 runs on that, restricting the batsman to 1. 12 overs have been gone. The total for team hooked in this all-important inaugural match of Hokersar T20 knockout cricket tournament is 73 for the loss of 4 wickets. The 2 batsmen in the middle are going great guns so far. A good partnership stitched together between Momin and Jahangir Bhatt. They have stabilized the innings of team hooked Srinagar. It will be worth watching how far they can take their team to. To tell you more about that, it's my friend Nasir in Hindi. Over to you, Nasir. शुक्रिया इरशाद भाई। टीम का स्कोर 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 11वें ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अब 12वां ओवर शुरू होने जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जब आखिरी झटका लगा था, चौथा झटका लगा था टीम हुक्ड को, तब टीम का स्कोर था 30 रन। कुल मिलाकर अब तक 42 रन जोड़े हैं इन 2 बल्लेबाजों ने। जहांगीर भट्ट और मोमिन सहारा दे रहे हैं टीम हुक्ड को। पूरी तरह से टॉप ऑर्डर बिखर गया था, दोस्त किया था घातक गेंदबाजी से आदिल रशी और इश्तियाक रसूल ने। जहांगीर लोन गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं। अपना तीसरा ओवर करेंगे वो उसी छोर से जहां से उन्होंने अपना पहला ओवर किया था। सामना करेंगे जहांगीर भट्ट ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे उन्हें सहारा मिल रहा है मोमिन का। जहांगीर, नए ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। इस ओवर का इस बार ये गेंद लेग स्टंप के आसपास, गेंद को खेलना चाहते थे शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, लेकिन बल्ले का मुंह पहले ही बंद किया था
यही कारण है कि बल्ले का जो बाहरी किनारा है उससे गेंद लगने के बाद फॉलो थ्रू की ओर गई। किस्मत वाले रहे कि गेंद ज्यादा देर तक हवा में नहीं रही, अन्यथा ये एक और झटका लग सकता था टीम होकड़ को। जहांगीर लोन इस ओवर में अगली बार, इस बार मिडल और लेग स्टंप के आसपास गेंद को लॉफ्ट किया। स्क्वायर क्षेत्र सीमा रेखा के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हालांकि वहां खिलाड़ी मौजूद थे इश्तियाक नाग, लेकिन गेंद ने हवाई रास्ता तय किया। इश्तियाक नाग ने हवा में उछलते हुए एक प्रयास किया था कैच लपकने का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जहांगीर लोन इस ओवर में अगली बार, सामने है जहांगीर भट्ट। इस बार फिर से शॉट, गेंद को खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और एक बढ़िया कैच लपक लिया है जहांगीर लोन ने। इस तरह से एक अच्छी बारी खेलने के बाद जहांगीर भट्ट अपनी कीमती विकेट गवा बैठे। टीम होकड़ को लगने वाला ये 5वां झटका, जहांगीर लोन को मिलने वाली ये पहली सफलता। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, बैट्समैन पर कमेंट हुए थे एक बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए, लेकिन वेरिएशन थी। मैंने पहले भी इस बात की जिक्र की है कि ये T20 क्रिकेट है, फटाफट क्रिकेट है, यहाँ आपको रफ्तार से ज्यादा वेरिएशन बचा सकती है। वही वेरिएशन देखने को मिली जहांगीर लोन की इस गेंदबाजी में। यही कारण है, एक बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे जहांगीर भट्ट, कमिट हुए थे बैक पे एक ऊंचा लेफ्टेड स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन वेरिएशन थी, गेंद की रफ्तार काफी कम थी इस बार। कमिट तो पहले से ही वो हुए थे स्ट्रोक लेने के लिए। यही कारण है, बाहरी सिरा लगा, आउटसाइड एज, गेंद हवा में उछली, एक आसान सा मौका मिला जहांगीर लोन को इस कैच को लपकने के लिए और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। इस तरह से 5वां झटका लगता हुआ टीम होकड़ को। टीम का स्कोर 78 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मोमिन सामना करेंगे जहांगीर लोन का। जहांगीर लोन हौसला उनका 7वें आसमान पर हो भी क्यों ना, एक बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है जहांगीर भट्ट की। जहांगीर भट्ट एक ऐसे खिलाड़ी है जो अगर टिक गए तो उन्हें आउट करना मुश्किल है, और उसी को आउट करने में उन्हें सफलता मिली। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रोक लेना चाहते थे, पूरी तरह से चूके स्टंप्स के काफी करीब खड़े हुए हैं विकेट कीपर वसीम कासरो। यही कारण है कि बल्लेबाज को हाथ खोलने का ज्यादा मौका ही नहीं दे रहे हैं वसीम कासरो। वसीम कासरो विकेट कीपिंग की अगर बात की जाए तो ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग की जब भी जिक्र होती है वादी कश्मीर में तो नाम आता है वसीम कासरो का। इस बार गेंद को धकेला, शॉट कवर्स की ओर, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, छोड़ बदलने का समय था। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 79 रन। जहांगीर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, ओवर द स्टंप्स। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर सिरा लगा, स्लिप कॉर्नर में एक प्रयास किया था आदिल रशीद ने कैच लपकने का, गेंद उनके हाथों से लगने के बाद छिटकी। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, जीवन दान के सहारे अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज। कुल मिलाकर 2 रन खाते में। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 81 रन। 12वें ओवर का खेल समाप्त। 81 रनों तक पहुंचने के लिए टीम होकड़ को 5 विकेटें गंवानी पड़ी। रफीक, आसिफ, जहांगीर लोन, आदिल रशीद, इश्तियाक रसूल, ये 5 गेंदबाज हैं जिनका अब तक सामना किया है फ्रांस मोटर्स ने। नुमान और मोमिन क्रीज पे मौजूद। मोमिन अब सामना करेंगे नुमान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। जब 12वां ओवर खत्म होने को आ रहा था, आखिरी गेंद जो ऑप्शन से बाहर की गेंद थी, तिरछे बल्ले से गेंद को स्ट्राइक करना चाहते थे, स्लिप कॉर्नर में एक अवसर मिला था कैच लपकने का। हालांकि प्रयास तो अच्छा किया था आदिल रशीद ने, लेकिन बदकिस्मती से गेंद उनके हाथों से छिटकी और जीवनदान के सहारे नुमान 2 के स्कोर पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद। अब सामना करेंगे मोमिन। फैसल, छठे गेंदबाज का उपयोग किया है फ्रांस मोटर्स के कप्तान आदिल रशीद ने। फैसल इस ओवर में पहली बार
ओवर द स्टंप्स। इस बार ऑप्शन से बाहर शॉट गेंद, मौका ताड़ा, गेंद को निकालना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र की तरफ, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, विकेट कीपर वसीम कासरो की तरफ 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ 82 रन 5 विकेटों के नुकसान पर टॉस हारकर यहां बैटिंग कर रही है टीम होकर्ड। होकर्सर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इनाग्रल मैच खेला जा रहा है। होकर्ड का मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स के साथ। आबिद नबी और मोहसिन रमजान इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलताएं नहीं मिली। इस बार बढ़िया गेंद, जगह बनाकर गेंद को निकालना चाहते थे कवर क्षेत्र की तरफ से, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, बल्ले और गेंद का भी कोई मुलाकात नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर वसीम कासरो के दस्तानों में। फैसल अपना पहला ओवर कर रहे हैं, इस पारी का 13वां ओवर। फैसल ओवर द स्टंप्स। अंपायर एडवोकेट हिलाल अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस बार थोड़ी सी शॉट बैक पर गए, गेंद को धकेला, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लगने दिया। जब तक मिड ऑफ क्षेत्र से खिलाड़ी आए, इश्तियाक नाग गेंद को उठाकर थ्रो करे गेंदबाज की तरफ 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ऑफसाइड में फैलाई हुई फील्ड नजर आ रही है। स्लिप कॉर्डन में कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी मौजूद, गली पे 1 खिलाड़ी जहां आदिल ऋषि फील्ड कर रहे हैं, पॉइंट लगाया गया है। कवर्स में 1 खिलाड़ी, मिड ऑफ पे हैं इश्तियाक नाग। इस बार हिप रीजन के आसपास गेंद को धकेला, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए स्क्वायर क्षेत्र से 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं मोमिन। स्ट्राइक लेंगे नुमान सामना करेंगे फैसल का। फैसल ओवर द स्टंप्स, हालांकि रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सटीक लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद यही कारण है दुविधा में बल्लेबाज जरूर पड़ता है। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन लगाया गया है, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। कुल मिलाकर 3 ऑन साइड में, 6 ऑफ साइड में, 6-3 की फील्ड के साथ फैसल ओवर द स्टंप्स। सामने है नुमान, बल्ला हवा में झूलता हुआ गेंद को खेला स्लिप कॉर्डन की ओर, रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड से साफ मना किया है मोमिन ने। अब कुछ समझाने के लिए आ रहे हैं नुमान को, क्योंकि मोमिन जानते हैं जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं नुमान। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कतन हुकर्ड टीम ऐसा नहीं चाहेगी कि यहां एक और झटका उन्हें लगे। देखना है मोमिन की नसीहत किस कदर काम आएगी नुमान को। नुमान बल्ला हवा में झूलता हुआ, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को खेलना चाहते थे, पहले से ही बल्ले का मुंह उन्होंने बंद किया था। भारी सिरा लगा हवा में, हालांकि कुछ देर तक गेंद जरूर रही। कैच लपकने का प्रयास किया था गेंदबाज फैसल ने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस ओवर का खेल समाप्त, 13वें ओवर का खेल समाप्त। 5 विकेटें गंवाई हैं अब तक होकर्ड ने। टीम का स्कोर 84 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आधी टीम ड्रेसिंग रूम में आराम फरमा रही है। टीम होकर्ड की टॉस जीतकर यहां फील्डिंग करने का फैसला किया था कप्तान आदिल ऋषि ने। आदिल ऋषि और इश्तियाक रसूल जिन्होंने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला था फ्रेंड्स की तरफ से, काफी घातक गेंदबाजी उन्होंने की। टॉप ऑर्डर को उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन फिर सहारा मिला जहांगीर भट्ट और मोमिन का, जिन्होंने 6वें विकेट के लिए 5वें विकेट के लिए कुल मिलाकर 43 रन की साझेदारी की थी, जिससे कुछ हद तक सहारा मिला टीम होकर्ड को। जहांगीर लोन अपना आखिरी ओवर करने जा रहे हैं ओवर द स्टंप्स। सामने है नुमान, इस बार शॉट, बढ़िया स्ट्रोक, देखने लायक शानदार प्लेसमेंट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। शॉट गेंद थी, जो ही देखा कि शॉट, मौका ताड़ा, वहां हालांकि प्रोटेक्शन रखी गई थी, लेकिन स्ट्रोक की रफ्तार इस कदर तेज थी कि फील्डर को हिलने तक का मौका ही नहीं मिला। नुमान के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। 88 रन। मोमिन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए ऐसा स्ट्रोक खेलने के लिए। जहांगीर की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्लो रन का उपयोग, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। अंपायर ने खूबसूरत बाजू हवा में लहराए और इशारा किया वाइड का। अतिरिक्त के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन। टीम का स्कोर 89 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 38 रन के स्कोर पे चौथा झटका लगा था होकर्ड को, और तब ऐसा लग रहा था शायद 60-70 के आसपास पारी सिमटेगी, लेकिन कुछ और ही इरादे थे जहांगीर भट्ट और मोमिन की। मोमिन अभी भी हालांकि विकेट पे मौजूद, लेकिन जहांगीर भट्ट एक अच्छी पारी खेलने के बाद अपनी विकेट गंवा बैठे। स्कोर अब पहुंचता हुआ 90 रन
5 विकेटों के नुकसान पर जहांगीर लोन। हालांकि उन्होंने एक सफलता भी हासिल की थी जहांगीर भट्ट की, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी खर्चीले साबित हुए हैं जहांगीर लोन इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है नुमान, बल्ला हवा में झूलता हुआ इस बार बैक पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रन हासिल किया नुमान ने अपने लिए, अपने टीम के लिए। टीम का स्कोर 95 रन 5 विकेटों के नुकसान पर जहांगीर लोन। छब्बीस के स्कोर पे सामना करेंगे मोमिन। इस बार ऑप्शन से बाहर, बढ़िया ड्राइव, ऑफ ड्राइव। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से 1 रन खाते में। नुमान अब सामना करेंगे जहांगीर लोन का। फैलाई हुई फील्ड, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5-6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 ऑन साइड में। इस बार ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक लेना चाहते थे, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, देखना है कैच कर पाएंगे या नहीं। और एक अच्छा सा कैच जहांगीर लोन के द्वारा। इस तरह से एक और झटका नुमान के रूप में हुक्कड़ को लगने वाला ये छठा झटका। एक बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे नुमान। मैंने पहले भी इस बात की जिक्र की कि जल्दबाजी में नजर आ रहे थे। एक बड़ा स्ट्रोक लेने की खुराक में बल्ले के ऊपरी भाग से गेंद लगी, हवा में ज्यादा उछली, एलिवेशन ज्यादा मिली, डिस्टेंस कम और पर्याप्त समय मिला जहांगीर लोन को इस गेंद को कैच करने के लिए। और इस तरह से एक और झटका नुमान के रूप में टीम हुक्कड़ को लगने वाला ये छठा झटका। मोमिन खामोश दर्शक की तरह अभी भी मौजूद है। अब सामना करेंगे जहांगीर लोन की अगली गेंद का। देखा जाए तो पलटाबारी नजर आ रहा है फ्रंट्स मोटर्स का। बड़े सितारे हैं इस मैच में, जाहिद डार, मोहसिन रमजान, आबिद नबी, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, आदिल रशी, सब बड़े नाम आज इस मैच को खेलने के लिए आए हैं। वसीम कासरो हमारे साथ, जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं, एंटरटेनर हैं, खान राजा। क्योंकि जेके स्पोर्ट्स टाइम पेज पे आज लाइव कवरेज थी, यही कारण है खान राजा आज जेके स्पोर्ट्स टाइम पे नहीं आए। मोमिन अब सामना करेंगे जहांगीर लोन का। नए सिरे से फील्डिंग सेट हो रही है जहांगीर। बयान मेरन इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। जहांगीर लोन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं बल्लेबाज। सामना करेंगे मोमिन। इस बार ऑप्शन से बाहर, गेंद को दिशा भर दी, गेंद की स्लिप कॉर्डन की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, रन की कोई संभावना नहीं। 14वें ओवर का खेल समाप्त। टीम का स्कोर 92 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जब तक नए ओवर का खेल शुरू हो जाएगा, यहां से ऐसा प्रतीत होता है शायद आसिफ को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाएगा। यहां कमेंट्री में परिवर्तन होगा। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर इरशाद भाई। Thank you, Nasir. So, a couple of wickets have gone down in the last 3 overs with the help of 2 mighty catches by Jahangir Loan. 2 exceptional catches. You need athletics. You need athletic stuff to catch those. Once again, an opportunity. This might be a third one. Yes, an easy catch down to the throat of Jahangir Loan, who has already taken 2 blinders of his own bowling, and Team Hokersar Srinagar are now sinking at 92 for the loss of 7 wickets now. Jahangir Loan, after that brilliant partnership between Momin and Jahangir Bhatt, we all thought that the things have been stabilized and Team Hokersar Srinagar are on course of a good score, but Jahangir Loan had other ideas.
taking two brilliant caught and bowled chances. Moving towards his right. And then taking the catches at mid-on, if I'm not wrong. That takes athletic stuff. Diving to his right and plucking the balls out of the thin air. What a player. What an all-rounder Jahangir Lone is. Meanwhile, Asif flighting the ball up, enticing the batsman in a lofted shot, and the batsman obliging and losing his wicket in the process. Jahangir Lone taking an easy catch at the long on boundary. The next batsman in. It is Asif, balls a beauty. Al Jeff off a delivery. Adil Pollard is the new man in. Asif bowls to Momin. Momin swivels and pulls it straight to the fielder at deep square leg. The batsman in the meantime walks across for a single. 15th over in progress. The score is 94 for the loss of 7 wickets. Asif has bowled economically. He's given away 5 runs so far, and this is his second over. Umpire Advocate Hilal, one of the top-notch umpires of the valley. He can do no wrong while umpiring. He's officiating in this all-important encounter here at HMT in the Hokersar knockout cricket T20 cricket tournament. Asif around the wickets to Adil now. He's trying to cram him up for space. Adil, and would you believe, Wasim could not hold on to that outside edge from Adil. Adil is a top player from SNW, one of the famous tournaments of the valley. Short ball. Adil tucking it away and tucking it brilliantly down towards deep fine leg before the fielder from the boundary come in and fields, and the batsmen take 2 more runs. 2 more runs means Adil Pollard is off the mark. The next ball from Asif outside the off stump, trying to fly, trying to entice the batsman in a foul shot, and it has been signalled as wide by umpire Advocate Hilal. It is Asif once again, tosses it up, and he has been bowled. That's a loose shot, trying to thrash it over mid-wicket, away from the line, away from the body, and the ball of the bottom edge has hit his off stump in the same way like Abid Nabi's off stump had been castled by an inside edge, and Adil Pollard has been dismissed in the same fashion. 96 for the loss of 8 wickets now. 5 overs remaining. 5 overs means a lot, 30 balls. And Team Hukut Srinagar are losing wickets at regular intervals. Friends Motors Narbal are on top. They are in the driver's seat. Asif taking 2 wickets in that over. He has bowled 2 overs. He has given away 7 runs, 8 runs. He has taken 2 wickets. He has bowled brilliantly. Almost all the bowlers of Team Friends Motors Narbal bowling economically and taking wickets. Team Hukut Srinagar are looking down and out in this encounter. Sajjad is the new batsman in, and he's going to bowl. He's going to face Asif. Is on the non-striker's end. Faisal is the bowler, and Momin is the batsman. Momin is batting brilliantly.
but he's not getting spot from the other end. The next ball has been pulled and pulled brilliantly, but he cannot beat Jahangir Lone, who is patrolling like a lion there at the boundary, taking catches and saving runs for his team, taking wickets well. You can't take this man out of the game. He is a brilliant player, a brilliant all-rounder. Here is Faisal. The score is 95 for the loss of 8 wickets, and we are in the 16th over of their innings. That means the team hooked innings. The second delivery of Faisal. The batsman going behind the line and nudging it away onto the offside. That's well played by the batsman, bringing Momin on strike, who is batting brilliantly. The score moves to 95 for the loss of 8 wickets. 2 batsmen in the middle, Asif and Momin. Asif is batting on 1. Momin is batting on 25. The next ball, Momin goes on to the back foot and drives straight to the fielder. In fact, trashes it off the back foot, but not finding the gap. It still manages to take a single down towards sweeper cover. Score now moves to 96. He moves himself to 27. 96 for the loss of 8 wickets. Team Hooked Srinagar are up against Friends Motors Narbal. Faisal to the batsman Asif, who drives sweetly, but straight to the fielder at mid-off, who's fielding inside the circle. On the offside, there cannot be any runs. Momin is batting beautifully on 27, but he's not getting spot. The next delivery was in the air for some time, but away from the fielders, and the batsmen take a single. 1 more run to the total, which now moves to 98. They are gingerly moving towards that 100 mark. 98 for the loss of 8 wickets. Never getting that momentum, apart from that partnership between Momin and Jahangir Butt. Team Friends Motors Narbal bowlers never letting them off the hook, and that's why they're struggling at 97 for 8. The next ball from Faisal has been nudged away, and the first fumble, and that too from Jahangir Lone, allowing the batsman to take 2 more runs. With that couple, the score 100 moves up for Team Hooked. 100 for the loss of 8 wickets after the completion of 15 overs. The scoring rate is not a problem, but they have lost 8 wickets, and this partnership should get 20 to 30 runs to give some respectability to that score, which looks very shabby. It looks ugly because Team Friends Motors Narbal have got the likes of some exceptional batsmen in their lineup. Ishtiyaq Rasool has been brought into the attack. Outside the off stump, it was in the air. The fielder is running towards his left to cut that off, and in the meantime the batsmen are coming back for the couple. 2 more runs. Asif, the batsman, going on to the back foot. The ball pitching on the off stump, moving further away. The batsman had ample time to go on to the back foot and cut it. Here is Ishtiyaq Rasool once again, and this time beating the batsman who wanted to drive it back along the track over the bowler's head, not making contact, and the ball is safely gathered by wicketkeeper Wasim behind the stumps. 102 for the loss of 8 wickets. A well disguised slower ball. Ishtiyaq Rasool, the main wrecker-in-chief, demolishing the top order of Team Hooked Srinagar, and that is the reason they are in strife at this moment. 104 the score now with the help of that single. 104 for 8.
Friends Motors Narbal would want to polish the tail off and restrict the opponents to a low score in this encounter. Ishtiaq Rasool, and this time the batsman coming out of the crease, taking it on the rise and playing it straight to the fielder at deep mid-off, who fields, and Momin takes a single. He moves himself to 29, and the total in the 16th over is 106 for the loss of 8 wickets. Here is Ishtiaq Rasool to Asif. Asif guides it straight to the fielder at backward point, who fumbles, allows the batsman to go through for a single. It was hit straight to the fielder at backward point, but the fielder not having eyes on the ball, as a result making a fumble. The score now moves to 107 for the loss of 8 wickets. Fielder has been brought into the gully position. Here is Ishtiaq Rasool, comes in and bowls a lovely delivery. That ball pitching outside the leg stump, coming towards the batsman, threatening the pads. The batsman did well, keeping low as well. The batsman doing well, going on to the back foot, eyes on the ball, nudging it away onto the onside, and taking a single after the completion of 16 overs. The total is 108 for the loss of 8 wickets. 108 for 8. Momin is batting on 30. Asif is batting on 6. And to tell you more about the proceedings of the match, it's over to my friend Nasir. शुक्रिया इरशाद भाई। 17वें ओवर का खेल समाप्त। टीम का स्कोर 108, 8 विकेटों के नुकसान पर 35 के स्कोर पे सामना करेंगे मोमिन। इस बार शॉट गेंद को खेला बॉलर के बगल से, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑप्शन के आसपास की गेंद थी, गेंद को निकाला ये जानते हुए कि वहां इलाका खाली पड़ा था, उसका लाभ मिला बल्लेबाज मोमिन को। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 112, निजी स्कोर मोमिन का अब पहुंचता हुआ 39 रन। रफीक ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ, वहां सीधे गेंद गई खिलाड़ी के पास, एक आसान सा कैच लपक लिया जहांगीर लोन ने। इस तरह से 9वां झटका लगता हुआ टीम हुकड़ को 7 बल्लेबाज मोमिन 39 रन बनाकर पवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, और चौथा कैच लपक लिया है इस मैच का जहांगीर लोन ने। 112, 9 विकेटों के नुकसान पर। फैसल 39 रन बनाकर उन्होंने एक बड़ी विकेट हासिल की है मोमिन की। मोमिन और जहांगीर भट्ट सिर्फ यही 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने योगदान दिया बल्ले से। यही कारण है अब तक हालांकि एक बड़ा स्कोर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में कामयाबी मिली है हुकड़ को। क्रिकेट अनिश्चितताओं की खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए फ्रेंड्स की जो बैटिंग लाइन है उसमें काफ़ी गहराई है। ऐसे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए उन्हें इस टारगेट तक पहुँचने के लिए। देखना है क्या उन्हें यह लक्ष्य चेज करने में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। फैसल ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। एक 118, 9 विकेटों के नुकसान पर। फैसल ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार काफी नीचे रही, शफल किया, बल्ले के 2 एंड से गेंद लगी। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए जहांगीर लोन के द्वारा 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। इस 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं बल्लेबाज। अब स्ट्राइक लेंगे आसिफ। टीम का स्कोर 113। फैसल किए गेंद लेग स्टंप के आसपास, गेंद को धकेला अंपायर के इशारे की अभी भी प्रतीक्षा। गेंद बल्ले से लगी या पैर से, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, जब तक आदिल रशी के हाथों गेंद फील्ड होकर थ्रो किया जाए विकेट कीपर के पास
2 रन खाते में। अंपायर का इशारा अब आ रहा है लेग बाइज का। लेग बाइज के रूप में 2 रन खाते में। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 115 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत अच्छी नहीं मिली टीम होकड़ को। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। क्रेडिट जा रहा है गेंदबाजी करने का आदिल रशी और इश्तियाक रसूल को। इस बार ऑप्शन से बाहर छेड़छाड़ करना चाहते थे, किस्मत वाले रहे, किनारा नहीं लगा। गेंद गई विकेट कीपर वसीम कासरू के दस्तानों में। वसीम कासरू से काफी दूर, क्योंकि उछाल ठीक मिल रहा है गेंदबाज को। शायद यही कारण है कि स्टंप के नजदीक रहना मुनासिब नहीं समझा वसीम कासरू ने। बिल्कुल उनके बगल में स्लिप कॉर्नर में फील्ड कर रहे हैं आदिल रशी। फैसल ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर हड़बड़ाए अंदाज से गेंद को धकेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ 18वें ओवर का खेल समाप्त। 9 विकेटें गंवाई हैं अब तक टीम होकड़ ने। अभी भी 2 ओवर शेष। आदिल रशी शायद गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, जो अपना आखिरी ओवर करेंगे। टीम का स्कोर 119 रन, हालांकि 115 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदें अभी भी शेष। आदिल रशी इस पारी का 19वां ओवर करेंगे, जो उनका आखिरी ओवर होगा। आसिफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद। एडवोकेट हिलाल गौहर सामना करेंगे आदिल रशी का। आदिल रशी अपना आखिरी ओवर करेंगे, जो इस पारी का 19वां ओवर होगा। टीम का स्कोर 115 9 विकेटों के नुकसान पर। कवर्स में एक खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ लगाया गया है और स्लिप कार्डन में कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी। इस बार लेग स्टंप के आसपास प्रिजन को टारगेट कर रहे हैं आदिल रशी। गेंद को धकेला, बड़ी तेजी के साथ रन लेना चाहते थे, लेकिन दूसरे रन के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। इस तरह से टीम होकड़ ऑल आउट हुई है 116 के स्कोर पे। 117 रन का लक्ष्य मिला है चेस करने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स को। आखिरी झटका लगता हुआ होकड़ को रन आउट के रूप में एक विकेट गंवाई है। हालांकि जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिली। पहला रन उन्होंने हासिल किया था, दूसरा रन लेने के प्रयास में वसीम कासरू ने गेंद को गैदर करके थ्रो किया और इस तरह से एक और झटका पारी सिमटी है टीम होकड़ की। 116 के स्कोर पे 117 रन का लक्ष्य मिला है फ्रंट्स मोटर्स को चेज करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं आदिल रशी, जो फ्रंट्स मोटर्स के कप्तान हैं। आदिल रशी, आपने जब टॉस जीता तो आपने यहाँ फील्डिंग करने का फैसला किया। हालांकि हर कोई यही चाहता था कि यहाँ टॉस जीतकर बैटिंग किया जाए। क्या आपके मन में चल रहा था जब आपने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया? देखिए, लास्ट ईयर हम इधर आए, हम इधर ट्रॉफी उठा के गए, विनर रहे हम लास्ट ईयर का जो टूर्नामेंट हुआ था। तो यहाँ का विकेट जो इनिशियली होता है वो स्लो होता है, और जो ये टूर्नामेंट का पहला मैच था, मैट भी नहीं है, तो उस वजह से हमने फैसला किया कि हम टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे। और हमारे पास बैटिंग स्ट्रेंथ आज अच्छी थी, तो नया बॉल, ये जो बॉल अच्छा था इनका, ये हिल रहा था, थोड़ी सी हवा चल रही थी, इसके लिहाज से हमने फील्डिंग की, जिसका हमने फ़ायदा उठाया नए बॉल से। जो टारगेट मिला है 117 रन का ये लक्ष्य मिला है आपको चेज करने के लिए, क्या जा रहा था आपके मन में? क्योंकि शुरुआत तो बढ़िया दी है। एक तो मोहसिन रमज़ान और आबिद नबी जब खेलने के लिए आए तो कुछ अच्छे स्ट्रोक्स ज़रूर देखने को मिले। ऐसे में लग रहा था कि 150 के आसपास टीम पहुंचनी चाहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टार्टिंग में जब पहला ओवर डाला तो उसके बाद विकेट थोड़ा पड़ा, हमने बोला कि विकेट थोड़ा स्लो खेल रहा है, उस वजह से हमने फिर लाइन लेंथ ऑल्टरनेट की। तो बॉल को जितना हो सके, मैं बॉलर्स को बोल रहा था ऊपर बॉल डाल दो, क्योंकि बॉल हिल रहा था, उसकी वजह से हमने बॉल ऊपर डाला। उसमें से जो 1-2 निकले, पहले 3-4 विकेट चल आउट हो गए उनके। आबिद नबी एक राइट शॉट खेल के आउट हो गया, तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला हमें पहले 6 ओवर में, तो जिसकी वजह से हमने इनको रिस्ट्रिक्ट किया। बीच में जहांगीर अच्छा खेल गया, वो लड़का एक छोटा मोमिन अच्छा खेल गया, बट उनका यही कहूँगा मैं, इनएक्सपीरियंस, अगर वो ये 2-3 ओवर खेल लेते मे बी टारगेट 130 पहुँचता, बट क्रिकेट के बारे में नहीं पता, क्या पता 130 अच्छा स्कोर हो। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन फील्डिंग को भी श्रेय जाता है। जहाँ तक हमने देखा कि 4 कैच लब के हैं जहांगीर लोन ने भी।
फील्डिंग तो हमारी ऑब्वियसली हमेशा से अच्छी होती है, बट आज थोड़ा डिसअपॉइंट है क्योंकि 2-3 कैच ड्रॉप हुए। एक तो मेरे से ही ड्रॉप हुआ स्लिप में, एक शॉर्ट लेग पे हुआ। बट कोशिश करेंगे, सीज़न का पहला मैच है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे फील्डिंग पे, इंशाल्लाह इससे अच्छा फील्डिंग डिपार्टमेंट दिखाएंगे अच्छे से। हाँ, एक आखिरी सवाल, जो पिच में उछाल है, यहाँ से भी ये प्रतीत होता था कि सीडो बाउंस है, उतना उछाल भी नहीं है। या तो स्लो रन का उपयोग ज़्यादा करते थे गेंदबाज, ऐसा तो जहांगीर लोन की गेंदबाजी के दौरान भी मिला, शायद वो भी एक कारण है। 1-2 खिलाड़ी ऐसे भी आउट हुए हैं जब वो पहले से ही कमिट होते थे कोई बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए, वेरिएशन के तौर पे उन्हें वहां चकमा लगा। देखिए, ये जैसा विकेट खेल रहा है ना, विकेट बहुत स्लो है। इस विकेट को खेलने के लिए बीच में ऐसे 1-2 प्लेयर होने चाहिए जो गेम को चलाए। अगर आप 116 की इनिंग को बाहर निकालेंगे, इसमें सिंगल डबल बहुत कम होंगे। तो इसमें चौके छक्के मारे इन्होंने तो, बट अगर ये सिंगल डबल्स गेम बीच में चलाते तो ये स्कोर 140 पे पहुंचता। 140 इस विकेट पे बहुत अच्छा स्कोर है। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ द लक फॉर रेस्ट ऑफ द गेम, थैंक यू। यहाँ नेवल सेंटर से यही है कि 116 रन बनाकर पारी सिमटी है होकड़ की। 117 रन का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स को। जो ही दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, हम आपकी खिदमत में वापस हाजिर होंगे। शुक्रिया।